So let's continue with the second part of the pair of lines. In the previous lecture we finished up to exercise 4.1 का मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किया था. Now I'll go for the next part. Question number 2 में का 4, 5, 6 I'm going to solve. So let's go for that. Question number 2. Question number 2. इसमें से 4, 5, 6 exercise 4.1. So 2 subpart 4. Find the separate equations of the lines represented by the following equations. अब देखो separate equations, अगर pair of lines का equation है like joint equation, the combined equation is uv is equal to 0. Then what are the separate equations? The separate equations are given by u is equal to 0 and v is equal to 0. ऐसे होते हैं उसके separate equations, isn't it? तो सेपरेट इक्वेशंस के लिए आई विल ट्राई टू फैक्टराइज दिस. इसे मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा. सो दिस इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 24 तो माइनस 12 एंड प्लस 2, 12 टू द 24. तो ये क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0. अब इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे. क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? आई विल टेक 3x कॉमन फ्रॉम हियर, so this will be x minus 4y plus 2y common from here. This is x minus 4y is equal to 0. x minus 4y and दूसरा होगा 3x plus 2y. 3x plus 2y is equal to 0. And therefore the separate equations of the lines are क्या होंगे बताइए? Separate equations of the lines are x minus 4y is equal to 0 and 3x plus 2y is equal to 0. Okay, these are the separate equations of the required lines. Did you all understand this? Did you all understand this? Is this okay? Question number 2 mega 5. Yeah. Question number 2, part 5. टू. मुझे इसका भी सेपरेट इक्वेशंस चाहिए, तो मुझे इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा. I'll have to factorize this. So 3 3s are 9. The product has to be minus 9. The product should be minus 9 and subtraction is minus 2 root 3. Subtraction is to be minus 2 root 3. So क्या factors हो सकते हैं इसके? Can I say the subtraction should be minus 2 root 3? ऐसे दो factors होंगे. तो क्या factors हो सकते हैं? Minus 3 root 3 and plus root 3. If I multiply, the product आएगा minus 9 and subtraction is minus 2 root 3. I hope this is clear to you also. This will become 3x square minus 3 root 3x plus root 3x, sorry xy वाला, minus 3y square is equal to 0. चलिए इसमें से क्या कॉमन लाना है फटाफट बताइए. इसमें तो 3x कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस रूट 3y प्लस रूट 3y कॉमन आएगा,
So x minus root 3y is equal to 0. Therefore, this is going to be x minus root 3y into 3x plus root 3y is equal to 0. Now, this is looking like u into v is equal to 0. And therefore, what are the separate equations? Separate equations क्या होंगे बताइए? Therefore, बोलिए, अरे मुंह खोलो यार, बोलो please, come on. Separate equations are, come on, hello. Separate equations are given by, hello, x minus root 3y is equal to 0. Can you all hear me please? यार पिक्चर मत देखो, मेरे को नहीं करना है ये, तुम लोगों को सॉल्व करना है. You have got to answer it. So these are the separate equations. Did you understand that? Can you all hear me? Hello. Problem. ये है स्टार प्रॉब्लम 2 सब पार्ट 6, 2 में से 6. But as I told you, this is a star problem. ठीक है, कैसे करेंगे बताइए? How do you solve this? Auxiliary form. I'll convert this. ये फैक्ट प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है. So उसके लिए मैं क्या करूँगा? डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर. If I'll divide through out by x square, what do I get there? This will become 1 plus 2 cosec alpha into y upon x plus y square upon x square is equal to 0. और जब हम बोलते हैं y is equal to mx is the equation of a line passing through origin, तो हम एक्चुअली बोलना चाहते हैं m is equal to y upon x. और इसी तरह से y upon x के लिए मैं m सब्स्टिट्यूट करूंगा, so this will become m square plus 2 cosec alpha into m plus 1 is equal to 0. ये बन जाएगा. ठीक है, this is what we get there. 2 cosec alpha into m plus 1 is equal to 0. Now this is a quadratic equation in m. It has got two roots, m1 and m2. And what is the sum of the roots? Sum of the roots m1 plus m2 is equal to minus b upon m, and product of the roots m1 m2 is equal to c upon a. Let me compare this with am square plus bm plus c is equal to 0. So what will be m1 plus m2 is equal to, बताइए, minus 2 cosec alpha upon 1. And what is m1 m2 is equal to? That is equal to, come on, c upon a, मतलब 1, isn't it? So these are the product of the roots. अच्छा, by the way, अगर ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन से मैं और एक चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ. You know, the roots can also be given by m1 and m2 is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? m1 comma m2. The roots are given by minus b minus 2 cosec alpha plus or minus square root of 4 cosec square alpha 4 cosec square alpha minus 4 into 1 into 1. और ये क्या बनेगा? Divided by 2a, 2 into 1. So m1 m2 is equal to minus 2 cosec alpha plus or minus square root of, इसमें से 2 बाहर आएगा, 4 जो बाहर आएगा 2 बन जाएगा, cosec square alpha minus 1. So 1 plus cot square alpha is cosec square alpha, cosec square alpha minus 1 is cot square alpha. तो ये क्या बन जाएगा? This will become divided by 2. आप 2 कॉमन लीजिएगा और कैंसिल करिएगा. तो what is this going to become? m1 and m2 is given by minus cosec alpha
प्लस कॉट अल्फा, और m2 को मैं बोल सकता हूँ माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा. ओके, दिस इज व्हाट वी गेट देयर. सो अगर मुझे यहाँ पर उसके मिल गए तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी जो मैंने यहाँ पर लिखा. आई रियली डोंट नीड दिस. आई डोंट नीड दिस ऑल. ठीक है. एंड therefore the separate equations are given by y is equal to m1x and y is equal to m2x. That is, y is equal to minus cosec alpha plus cot alpha into x, and y is equal to minus cosec alpha minus cot alpha into x. These are the separate equations. Is this clear to all? Is this okay? Any doubts about that? Hello? No, sir. Is that okay? Yes, sir. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था. I'll go for the next question. 2 subpart 7. 2 subpart 7. Find the separate equations of this. Again वैसे ही करना पड़ेगा. यहाँ पर factorization is not possible. So I'll divide throughout by x square. So that will give me 1 plus 2 tan alpha into m. Sorry, into y upon x minus y square upon x square is equal to 0. Now let's substitute for y upon x is equal to m. So this will become m square minus 2 tan alpha into m minus 1 is equal to 0. This is what we get there. और इसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप इसको करिएगा. मैं इसको एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ. सेम तरीके का क्वेश्चन है. I'll go for the next question now. Find the combined equation. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. 3 में से मैं सॉल्व करने वाला हूँ. 3 में से मैं सॉल्व करूँगा सेकेंड एंड फोर्थ. क्या बन जाएगा देखते हैं. यहाँ पे 3. Find the combined equation of pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by the following. ये दो लाइंस है, इनको परपेंडिकुलर लाइंस मुझे चाहिए. आई वांट द पेयर ऑफ लाइंस. ये दो लाइंस, अगर इन दोनों लाइंस को मैं बोलता हूँ से फॉर एग्जांपल द लाइंस आर लाइक दिस. ये पहला लाइन है. ठीक है. लेट मी कॉल दिस एज L1 डैश. और एक लाइन है यहाँ पे. अच्छा, L2 डैश. तो इन दो लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस मुझे चाहिए. मतलब L1 डैश को परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होगा? L1 डैश को परपेंडिकुलर होगा L1. ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. और L2 डैश को परपेंडिकुलर है L2. और से देखें
L2 डैश को परपेंडिकुलर लाइन है L2। तो मुझे उन्होंने कौन से लाइन का क्वेश्चन पूछा है? दे आर आस्किंग मी दिस टू लाइन्स, ये दोनों लाइन्स पूछे हैं, एंड दीज लाइन्स आर गिवन। इन दोनों का पेयर ऑफ लाइन्स का इक्वेशन ये रहा। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? सो दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ L1 डैश एंड L2 डैश। समझे? कैन आई फैक्टराइज दिस इक्वेशन? बहुत सिंपल है, इसको हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज लाइक 5 3 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, so this is 5x square plus 5xy minus 3xy minus 3y square is equal to 0. 5x common, x plus y minus 3y common, x plus y is equal to 0. X plus y common, 5x minus 3y is equal to 0. So x plus y is equal to 0 and 5x minus 3y is equal to 0. ये दो लाइंस मिल गए मुझे। तो इसमें से एक है L1 डैश और दूसरा है L2 डैश। उसका स्लोप क्या होगा? M1 डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है जिसका? माइनस ए अपॉन बी ना, इजंट इट? तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बताइए? दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1 अपॉन 1, and what will be M2 dash is equal to minus 5 upon minus 3. Therefore what is M1 is equal to, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, so they are negative reciprocals of each other, so M1 is 1 and M2, these are the slopes of L1 and L2 lines. Are you understanding that? तो ये है एक्चुअली 5/3, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 5, ऐसा बनेगा। समझे? एंड देयरफॉर अब मुझे लाइन चाहिए। ओके, उन्होंने बोला है द लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो कोई भी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसका इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx। तो ये जो लाइन L1 है जिसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू m1x और ये है y इज इक्वल टू m2x। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? y is equal to x and y is equal to minus 3 upon 5x. That means what is this going to be? X minus y is equal to 0 and this is going to be 3x plus 5y is equal to 0. ये दो लाइन्स हो जाएंगी जिसका इक्वेशन u is equal to 0 and v is equal to 0. So what will be the combined equation? Therefore combined equation of required lines, combined equation of required lines क्या बनेगा बताइए? u into v is equal to 0, मतलब क्या बनेगा? x minus y into 3x plus 5y is equal to 0, मतलब 3x square plus 5xy minus 3xy minus 5y square is equal to 0. 3x square plus 2xy minus 5y square is equal to 0. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखिए, अगर हमारा गिवन इक्वेशन क्या था, देखिए गौर से, यहाँ पर एक मैं चीज आपको शॉर्टकट बताना चाहूंगा। गिवन इक्वेशन था हमारा 5x square minus 2xy plus 3y square is equal to 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन था, isn't it? 5x square plus 5x square plus 2xy plus 2xy minus 3y square, minus 3y square, ऐसा इक्वेशन था। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इफ द गिवन इक्वेशन इज ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0,
तो इसके जो परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस होंगे, परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस, दैट इज गिवन बाय, आपको बस क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू इंटरचेंज ए एंड बी, ए और बी को आपको इंटरचेंज करना होता है, एंड एच का आपको साइन चेंज करना होता है। मतलब क्या होता है बताइए, उसका मतलब है दिस विल बिकम बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, वो इसका इंटर साइन और ये जो इंटरचेंज करेंगे, मतलब दिस विल बिकम माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस फाइव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसे सिर्फ आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस, सॉरी, माइनस फाइव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाट वी गेट देयर। तो ये एक शॉर्टकट है, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। इफ दे आस्क यू टू सॉल्व इट, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह का अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उसको अलग तरीके से हैंडल करने वाले। क्या होगा क्वेश्चन, देखिए बताइए। व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 मेगा 4, 3 सब पार्ट 4। थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 4। व्हाट इज दिस इक्वेशन बेसिकली? इसमें से x कॉमन आएगा, तो दिस विल बिकम 3x minus 4y is equal to 0. So this is already of the type uv is equal to 0, और इसके इक्वेशंस होंगे x is equal to 0 and 3x minus 4y is equal to 0, ऐसे होंगे, isn't it? अब ये है लाइंस, गिवन लाइंस, और इसके परपेंडिकुलर लाइंस कैसे होंगे? व्हाट आर गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर लाइंस? बोलो। x एक्सिस ये है एक्चुअली y एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन होगा x एक्सिस, जिसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 0। समझे? isn't it? अच्छा, ये जो लाइन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? आई मीन आई विल राइट दिस एज y इज इक्वल टू 3/4x, y इज इक्वल टू mx फॉर्म में हो गया इक्वेशन तो यार, isn't it? 3/4x, y इज इक्वल टू 3/4x, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा बताइए? व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर लाइन फॉर दिस? इसका परपेंडिकुलर लाइन होगा y इज इक्वल टू -4/3x, I can write it as 4x plus 3y is equal to 0, isn't it? अब इसके combined और joint combined equation of perpendicular lines, combined equation of perpendicular lines क्या होगा बताइए? uv is equal to 0, मतलब y into 4x plus 3y is equal to 0, or it will be 4xy plus 3y square is equal to 0. That's the answer. टाइप का था ये। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आप लोगों की तरफ से कुछ भी इनपुट या कुछ भी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ग्रेट। आर यू आर एबल टू हियर मी? पता नहीं, बस मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 मेगा 2, क्वेश्चन नंबर 4 सब पार्ट 2।
फाइंड के इफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस डिफर बाय दिस। देखिए, बिफोर आई प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, आप बताइए प्लीज। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमने बताया देखा था द प्रीवियस lecture I have seen, this is the auxiliary equation, and जिसमें m1 plus m1 and m2 are the roots which are the slopes of the two lines. अब इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा, what is the sum of the slopes, what will be m1 plus m2, if I'll compare it will be am square plus bm plus c is equal to 0. So sum of the slopes is minus b upon a, that is minus 2h upon b, and product of the slopes is m1 m2 is equal to c upon a, that is a upon b, ऐसा होगा. So we will remember these equations, sum of the slopes and product of the slopes. We will remember this as sum of the slopes and product of the slopes. Product of the slopes, isn't it? So ये auxiliary equation होगा. We'll copy all these things over here. This is the auxiliary equation, we say. And sum of the slopes and product of the slopes, ये भी हम copy कर देते हैं. Is that clear to all? ये सब मैंने बॉक्स में जो लिखे हैं वो सारे important formulae हैं. Please remember this. These are all very important formulae. तो चलिए यहाँ पर मुझे sum of the slopes and product of the slopes है, इसको यूज करना है जी. This is the auxiliary equation. अब जो हमारा given equation है, can I write it in the auxiliary equation? मुझे पूछा गया है find के if the slopes of the lines represented by this differ by 4. Slopes are differing by 4 this है. मतलब what is given here? Given m1 minus m2 is equal to 4. Okay. So first of all, let me convert this into auxiliary form. Auxiliary equation में convert करने के लिए I'll divide throughout by x square. तो ये बन जाएगा 3 plus k into y upon x minus y square upon x square is equal to 0. Multiply throughout by minus 1. So this will become m square minus km minus 3 is equal to 0. Now if I compare this with bm square minus 2hm प्लस ए इज इक्वल टू 0, ऐसा किया तो भी चलेगा, या फिर इसको डायरेक्ट कंपेयर कीजिएगा. ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कंपेयर करने के बाद मुझे मिलता है यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3, 2h इज इक्वल टू k, ए इज इक्वल टू 3, 2h इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू -1. समझे? Therefore what is the sum of the slopes? m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b, minus 2h upon b, and m1 m2 is equal to a upon b. So let me substitute here, m1 plus m2 is equal to minus 2h मतलब minus k upon minus 1, and m1 m2 is equal to 3 upon minus 1. So this is equal to minus 3 and this is equal to k. Is this okay? m1 m2 is equal to k and m1 m2 is m1 plus m2. अब मुझे चाहिए m1 minus m2. By the way, मैं जहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. I don't need this. Auxiliary equation की भी जरूरत नहीं. I don't need this. चलिए अब मुझे m1 minus m2 पता करना है. कैसे करेंगे? Now what is the connection between m1 minus m2? m1 उन्होंने दिया m1 minus m2 is 4. So what is the connection between m1 minus m2, m1 plus m2 and m1 m2? इसमें कोई connection वाला formula है?
जहाँ पर मैं जानता हूँ दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय m1 minus m2 और m1 plus m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 minus m2 का स्क्वायर प्लस 4m1 आप इसको अगर ओपन करके देखते हैं तो आप इसको आप चेक कर सकते हैं. इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट्स you will get that this is the correct one. ये सही है. m1 plus m2 का स्क्वायर तो इसमें प्लस 2m1 m2 यहाँ पर माइनस 2m1 m2 प्लस 4m1 m2. दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला कनेक्टिंग फॉर्मूला बिटवीन दीज टू. अब लेट प्लस में से इसमें सब्स्टिट्यूट करना है तो m1 माइनस m2 इज 4. ये रहेगा 4 का स्क्वायर. m1 plus m2 is k. This is k square. That's 4 times m1 m2 is minus 3. So what do you get there? So become k square is equal to 16 minus 3 minus 12 उधर जाके plus 12 बनेगा 28. So k is equal to square root of this is k is equal to plus or minus बनेगा of course. So k is equal to plus or minus 2 root 7. K is equal to plus or minus 2 root 7. Please check whether this is clear to you all. Any doubts about this? Hello, hello, hello. Are you understanding that? Are you understanding that? Yes, sir. Differ by 4. एक minute. मुझे check करना. Yeah, I'll just correct this. इन्होंने बोला कि m1 plus m2 m1 minus m2 मैंने substitution गलत किया है यहाँ पे. गौर से देखिए. This should have been m1 plus m2 is k. तो यहाँ पर k square होना चाहिए था. m1 minus m2 is 4. तो यहाँ पर 4 square होना चाहिए. Plus 4 times m1 m2 is minus 3. मैं बस इसको करेक्ट कर लूँ. So this k square is equal to 16 minus 12, that is 4, and therefore k is equal to plus or minus 2. K is equal to plus or minus 2 is the answer. Is this clear to all? Any doubts about that? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आई विल स्विच ओवर टू फिजिक्स. ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया था ये शुरू करने के लिए. Hence, I'll solve one more question, then I'll switch over to physics. Find k वाला ही कर लेते हैं. No. Question number 5 maker 2. Question 5 subpart 2. क्या दिया है यहाँ पे? Find the condition that. ऐसा दिया है ना. Find the condition that the line this may be perpendicular to one of the lines given by this and this. ये. Find the condition that this line is perpendicular to this. ये हमें फाइंड आउट करना है. ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. ठीक है. नाउ व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस? इसका अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँ तो वो क्या बन जाएगा? दिस इज बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इज इक्वल टू 0. ठीक है.
और इस लाइन को मैं y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में अगर लिखता हूँ तो क्या बन जाएगा? इस लाइन को अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में लिखूंगा तो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स। मतलब इस लाइन का स्लोप है माइनस थ्री, बट ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो यहाँ का जो स्लोप है वो इसका निगेटिव रेसिप्रोकल होगा, विद द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो इसका जो स्लोप बनेगा वो बनेगा 1/3. So I'll just substitute m is equal to 1/3 here. This will become b into 1/3 का square plus 2h into 1/3 plus a is equal to 0. Let me multiply throughout by 9. तो ये बन जाएगा b upon 9 into 9, तो ये बनेगा b plus this will become 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 6h plus 9a is equal to 0, और यही होगा इसका आंसर. दिस इज द कंडीशन, यही कंडीशन होगा. दिस इज 4.1 में का 5 में का 2. चेक करिए आंसर. 4.1 5 सब पर 2. देखिए आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है. इज द आंसर. 4.1 5 में का 2. जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर. ये रहा आंसर. As the same 9a plus 6h plus b is equal to 0. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. Yes, sir. Okay. I'll stop here for maths. I'll switch over to physics now.